Hello students, welcome to the channel. Today I will give the answer of chapter number 3 from 7th standard properties of natural resources. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूवर से, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। को पता है वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। जैसे टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, वैसे ही वर्ल्ड सॉइल डे भी होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टर्म। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। वाटर डज नॉट हैव अ शेप बट हैज डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। While freezing, the density of water is lower. Neutral soil has pH 7. Next question. Why is it said that air is a homogeneous mixture of various gases? Air is a homogeneous mixture of gases as it is primarily made up of nitrogen and oxygen. Its elements are not readily separated or distinguished from one another. Second, water is a universal solvent. Water is very good solvent as it can dissolve almost every substance in it. Therefore, water is known as the universal solvent. C1. There is no alternative to water for cleaning purposes. Answer. There is no alternative to water for cleaning purposes because it dissolves everything that is added to it. The reasons why it is called the universal solvent. The water dissolves all the dirt present in our clothes. The reason why we soak our clothes in detergent and water prior to washing. Also, water has a neutral pH, which means it does not harm the object which has to be cleaned and also does not affect the skin. Next question. What will happen if the amount of water vapor in the air increases? The amount of water vapor in atmosphere determines the level of humidity. As the amount of water vapor in the atmosphere increases, so does the level of humidity. Higher humidity levels result in excessive sweating, and this sweat does not dry quickly, leaving us feeling hot and streaky. Only one crop is grown repeatedly in the soil. If only one crop is grown repeatedly in the soil, it loses the fertility and gets devoid of the nutrients. For these reasons, crop rotation is an important producer so that the fertility of the soil is retained and there is no loss of nutrients. For example, after cultivation of wheat, the fertility of soil decreases and thus leguminous crops like peanut, moong, etc. are cultivated after its harvest. Leguminous crops restore the fertility of soil. Next question, with whom should I pair? तो यहाँ पर देखो ग्रुप ए ग्रुप बी करके दिया है, आपको बीच में करके आंसर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला आएगा एयर, उसका आएगा बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेकंड वाटर एक्सर्शन, सॉइल प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, आंसर फॉल्स। सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स। द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, answer true. The pressure exerted by air is called atmospheric pressure, true. Sixth one, explain the picture in your own words. तो यहाँ पर देखो ए में वाटर दिया है और बी पिक्चर में दिया है आइस, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, इमेज ए रिप्रेजेंट्स अ सर्विक्स और क्रैक विथ filled with water, whereas image B represents a cervix which has ice. It is evident from both the images that in image B, the width of the cervix increases as the water in the cervix freezes. This is one of the properties of water due to which it expands upon freezing. This expansion in water after freezing results in the widening of the crack in image B. Next is write answers in the following question in your own words. First one, how light is scattered by the air? Answer. Scattering is the phenomenon of change in direction of light rays when they travel through Earth's atmosphere. Air is a mixture of gases, smoke, dust and very fine particles. As the rays of light fall on these particles, these rays are scattered in all directions. It is a natural phenomenon which is observed in our daily basis. Next, explain the various properties of water. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स दिए हैं,
आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप आंसर कॉपी कर लो, ठीक है। See the question number C. Why is the density of seawater more than that of rainwater? Seawater has more density than rainwater because it contains salt ions. These salt ions makes the seawater heavier. Next question D1. What is the importance of good soil structure? Soil structure basically refers to the type of constituents and the ratio in which they are present in soil. The soil structure is important with respect to the growth of plants and the type of plantation which can occur in particular area. Good soil structures had advantages like roots get sufficient supply of oxygen. It has good water drainage. Net thus roots grow well. Next question E1. What are the various uses of soil? तो देखो सॉइल टाइप दिया है यहाँ पे सैंडी, क्लेई और लोमी और स्लिट। तो यहाँ पर पार्टिकल टाइप भी दिया है, प्रॉपर्टीज भी दिया है, तो आप यहाँ से कॉपी करो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of farmers. Soil testing is a method of determining the constituents of soil. A sample of soil is taken and it's tested its various characteristics, for example pH and electrical conductivity. It is important with respect to agriculture particles as it helps us in determining which crops can be grown in which region. It also gives us knowledge about the deficient nutrients and the deficiency can then accordingly be dealt with. It is also useful in determining if additional amount of fertilizers are required. See the G1. What is the importance of air in transmission of sound? Air acts as a medium of transmission of sound. When a sound wave passes through air, the particles of air vibrate back and forth parallel to the direction of the sound wave. Thus, when a sound wave travels in the horizontal direction, then the particles of the medium also vibrate back and forth in the horizontal direction. Sound cannot travel without a medium and thus we cannot listen to sound in the space because of absence of. Last one, why should a glass bottle completely filled with water never be kept in the freezer? जो बॉटल में हम पानी भरते हैं ना, वो पूरा भरकर नहीं रखना चाहिए फ्रीजर में। क्यों? A glass bottle completely filled with water should not be kept in freezer because the bottle can break and result in damage. We know that water expands after freezing and if completely water filled glass bottle is placed in freezer, the water would freeze and would expand resulting in the बॉटल टू ब्रेक। अभी भी आपने क्या करना है, बॉटल में पूरा पानी भरकर नहीं रखना है, थोड़ा मतलब उसकी स्पेस थोड़ी खाली रखनी है, नहीं तो अगर जब आइस बनती है ना जब पानी, तो वो थोड़ा और जगह लेती है, तो इसकी वजह से बॉटल टूट भी सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट बुक के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी आंसर्स दिए हैं, तो आंसर्स आपने कॉपी करना है यहाँ से। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो एज पर योर चॉइस। तो यहाँ पर मैंने दिए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।